Dear students, this is the fishery classes. You can find the WhatsApp number over here and the fishery classes demo lecture second. This is going on. You can find all the details regarding fees, registration, and who all the faculties will be joining in. This is the second demo. Let's move to the lecture. In the first demo, we have already dealt with sweet water fishes and fisheries over there. In this, we will deal with brackish water fisheries. Okay. So what are brackish water? If you have no idea, let's begin from the basics. Okay. Basic thing about the brackish water is that it is it is neither as saline as marine water or marine water and nor as sweet as fresh water. Okay. The salinity is somewhere in between. Okay. The best example of brackish water are lagoons. Okay. Here we can find Chilka Lake. In the map, you can see Chilka Lake. Okay. Chilka Lake, you can see that there is marine water also entering the Chilka Lake. Simultaneously, you can see there are two rivers. One is Daya River. Okay. Another is Bhargavi River that is entering your Chilka Lake. That means fresh water is also added to the Chilka Lake along with marine water coming from the sea side. Okay. The fresh waters are coming from the river and the marine waters are coming from Bhargavi River. Okay. So here you can understand that the brackish water have salinity in between, and why do they have salinity such? Okay. Now let's understand what is the property of brackish water. Before moving towards the property, let's understand from where you can find brackish water. Estuaries. I have told you estuaries are where? Mouth of river. That is the meeting of river with the ocean or sea. Okay. Estuaries are well developed in non-deltaic river, especially for example in India, Narmada and Tapi river. Okay. But even in deltaic river, estuaries are developed. Why they are developed? Deltaic river, they carry with themselves good amount of sediments. So when these sediments develop and they create huge delta, because of these huge delta formations, there are small estuaries which get developed. Okay. And in these estuaries, we have specific type of fish. Okay. They don't flourish in marine water. They don't flourish in fresh water. Okay. But among the majority of estuaries fishes, we find that they do move towards fresh water for spawning purpose. That is laying of eggs. Okay. I have explained to you coastal lagoons. Okay. The best example of coastal lagoons
we have western coast, we have eastern coast. In the eastern coast, the lagoons are well developed in Kerala. Examples of lagoons in Kerala are Vembanad Lake, Navembana, the Vembanad Lake. Next, Astamudi Lake. On the eastern, on the western side, sorry, this is the western coast, and this is the eastern coast. On the eastern coast, we have Chilka Lake, we have Pulicat Lake, we have Kelluri Lake. Kelluri Lake. Okay. We also have backwaters. I have explained yesterday what is backwater. I will do it again. See, there are numerous rivers which have a very short length. Because of this short length, and they are running at a very high speed because of they are originating from Western Ghat. Okay. Because of their high speed and short length, they are not taking much sediment with them. They rush towards the ocean. But Arabian Sea also is rushing towards the coast, and because of that, the river water at its mouths go in a reverse direction because of high tides. Okay, and this also becomes breeding ground for estuarine fishes. Then we have tidal creeks. During tide, there are small creeks. They are elongated ones, not small, but narrow and elongated creeks in Mumbai. The most famous are Airoli and Thane creeks. Start making notes of what I am saying, and they are important. I have been to 22 states of India, and I have traveled all across coastal India. If we take into account Andaman and Nicobar and 9 states, coastal states of India, what are these 9 coastal states of India? Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala. 5 of them this side: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha. Previously, Telangana and Andhra Pradesh were same. And we can take West Bengal also. Okay. These are the major coastal states: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana. Telangana does not have, sorry, just a moment. Telangana does not have. Okay. Telangana does not have. Odisha and West Bengal. So all together come 9 states. Along with Andaman, Nicobar, if we take the total coastal length would be 8118 kilometer, which is very vast. Along these vast coastline, we have numerous mangroves. Okay. Have you heard about Sundarban? Sundarban is nothing but mangroves. It's also delta.
and also it has mangrove forest. The productivity, when I am saying productivity, I am mentioning ecological productivity. Productivity of mangroves are highest among all ecosystem. Okay, and that's the reason it becomes breeding and spawning grounds for krills, crustaceans, which attracts good amount of fishes. So for fishes as well. So now you can understand why these estuarine water or the brackish water will be very important ground for fishery. Okay. If you have any doubt till now, you can just let me know. We'll move towards the next slide. I will just ask a question. If we see India, which part of India or which coast of India, that is the western coast or the eastern coast, which will produce more number of marine as well as estuarine fisheries? Any idea? See, before we jump into which coast would be producing, let's try to understand few more the concept of continental shelf, continental slope, and exclusive economic zone. Just give me a break for 2 minutes because electricity has gone. So, in order to understand what would be the geographical reason for high amount of fisheries or the cause of good amount of fish being produced, we need to understand the concept of continental shelf. Though it's a geographical concept, it's very important from examination point of view. See, if we can see over here. Can you see this portion? Okay. Yes, This sir. portion is called as continental shelf. Okay. The broader it is, broader means wider. More is the chances of having good amount of fisheries. Okay. Why? Its elevation or its gradient is of around 1 degree. ये 1 डिग्री का होगा at max. ठीक है, not more than that. ठीक है. And then it will be of, you can say this one, not this one, 5 degree. This is known as continental slope. All source of energy on earth is solar energy. So if it is of 1 degree and it's wider, that means the water level will be very shallow. That means the penetration of solar energy will be maximum. So this will come under photic zone. Photic zone means the light is able to reach over there. Because of the light reaching over there, there can be substantial amount of underwater grasses growing.
Okay, and these grasses are also doing certain kind of photosynthesis, so they are autotrophs. That means they are the primary producer. They are able to fix sunlight and produce their own food, and because of that, the dependent on them would come into existence. That means small krills, crustaceans, and even before that there will be small planktons. Okay, these planktons will attract krills, crustaceans, which will in turn attracts fishes. Okay, and because of that this will be breeding ground for fishes. Hope the concept is clear over here. Okay, second concept which I am going to explain is of exclusive economic zone. देखो क्या होता है, ये होता है एक आपका बेस लाइन. ठीक है, ये होता है आपका बेस लाइन. व्हाट इज दिस बेस लाइन? दिस बेस लाइन इज द हाई टाइड लाइन. From the high tide line till next 12 miles is said to be territorial water. Okay, that means it is the political boundary of a country. To enter this territorial water, you need to get visa. Then this is contiguous zone. Here, the ships, those who are doing trade, they can come up to here inside the contiguous zone, and after reaching territorial water, in front of the territorial water, the captain of this commercial ship will change, and the captain will be an Indian. He will command the ship. Okay, once the loading and unloading is done, the Indian captain will release it over here, and from here the ship will go back wherever they have to go to their destination. This contiguous zone also is monitored by Indian Coastal Guard. Okay? And if there is some foreign ship entering this contiguous zone, they are warned. Warning दी जाती है. And if they enter territorial water without any permission, they will be imprisoned. Okay? तो एक तरह का ये पॉलिटिकल पूरा बाउंड्री है. ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है बेस लाइन से 200 माइल्स. दैट मींस द एंटायर कमर्शियल एक्टिविटी कैन बी सोनली डन बाय द कंट्री. इसके अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो इंडिया से परमिशन लेगा ना होगा, एंड इट इज गाइडेड बाय यूनाइटेड नेशन क्लॉज ऑफ इंटरनेशनल सी, ओपन सी. ठीक है, कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ इंटरनेशनल सी क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ ओपन सी. ठीक है, यूएन क्लॉज. ठीक है, तो यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी में क्या होता है आपका? फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ओटेक, ओशन थर्मल पावर. ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन. ठीक है, these are major four things. Now you can understand wherever the continental shelf will be broad,
there is high chances of having good amount of fisheries, fishing ground huge होगा. ठीक है. Now let's understand the relevant concepts. Okay. What are the characteristics of brackish water? ठीक है. Brackish water has fluctuating water level because of tides. The salinity range is wide from 0 to 35 particles per thousand because it is the meeting ground of fresh water and saline water. There is high nutrient content because the fresh water is bringing with itself good amount of nutrient and sediment, and it is meeting the saline water. Because of the difference in density, there will be upwelling of water. In upwelling of water, what will happen is that the carbon or hydrocarbon which are settled on the ground will go up, and these hydrocarbons will act as food. Along with upwelling, dissolution of oxygen will be maximum, and because of this, again, what will happen? It will become good ground for fish breeding. Okay? And since there will be good amount of fishes, good amount of nutrient, oxygen, there will be high diversity of flora and fauna. Okay? And it will provide livelihood to good amount of fisherman folks. ठीक है. अब देखो इंडिया में क्या हो रहा है ना, सीधे समझो. इंडिया में आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल, दे अलोन अकाउंट फॉर 80% ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ श्रिम्प, झींगा जिसको कहते हैं. ठीक है, श्रिम्प. और ब्रैकिश वाटर एरिया में अगर आप देखोगे तो केरला में जो पैडी फील्ड होते हैं उसमें भी श्रिम्प का प्रोडक्शन होता है. फॉर एग्जांपल, देयर इज ए प्लेस नोन एज कुटुनाडु इन केरला. इसमें अंडर सी कल्टीवेशन होता है. होता क्या है, यहां पर जो पैडी एरिया होता है, ठीक है, सवेरे उसके अंदर पानी नहीं होता है, तो यहां पर पैडी लगाया जाता है. एंड दीज पैडीज आर टॉलरेंट टुवर्ड्स सलिनिटी. ठीक है, सॉल्टी वाटर के लिए टॉलरेंट होते हैं. और जब टाइड आता है तो इसी एरिया में श्रिम्प को ग्रो किया जाता है. ठीक है, and the such area where shrimps are grown in the paddy field are known as Pokkali. Pokkali paddy fields of Kerala. और सच एरिया वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहते हैं, हेरी. ठीक है, समझ में आया. अब इस एरिया में जो भी फिशेस होगा उसका टॉलरेंस टुवर्ड्स सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा. अगर 0% सॉल्ट है तो भी टॉलरेंट हो, अगर बहुत ज्यादा 40% सॉल्टीनेस है तो भी टॉलरेंट है. सच मैराइन फिश दोज हु हैव हाई वैल्यू ऑफ salt salinity range tolerance capacity, they are known as high value uri-haline marine fish species. uri-haline, ठीक है, यूरी का मतलब होता है हाई रेंज, हलाइन का मतलब होता है सॉल्ट. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. ठीक है, सो now we'll talk about different varieties of fishes which is available in brackish water. ठीक है, which is very much important from your examination point of view. ठीक है, the first variety is
Just a moment. Let me choose the right color. Okay. The first variety we are going to talk about is mullets. Okay. These mullets belong to the family of ray finned fishes. Okay. And in India, they account for around 3 to 7% of fishing industry. Okay. And there are basically 8 varieties of म्यूलेट्स. इसका पिक्चर दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको, आपने भी खाया होगा म्यूलेट्स को. ठीक है. स्पेशली इफ यू गो टू सदर्न बेल्ट, साउथ इंडिया, यू कैन सी द प्राइस ऑफ दीज म्यूलेट्स. ठीक है. दीज म्यूलेट्स आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसी. डेलिकेसी का मतलब क्या है? जो खाने में सबसे अच्छा हो. फॉर एग्जाम्पल इन अरुणाचल प्रदेश, व्हाट इज द डेलिकेसी? इरिदिंग. ठीक है. पोर्क इज द डेलिकेसी. These millets are omnivorous. They can eat anything. ठीक है. They feed on the lowest trophic levels on plant detritus and algae. देखो, ये प्लांट्स है, इसको खाते हैं ऑटोट्रॉप्स. सॉरी, ऑटोट्रॉप्स आर देमसेल्फ प्लांट्स. ठीक है. इसको खाते हैं क्या? आपका प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर. इस तरह से ट्रॉपिक लेवल चलता है. ठीक है. फूड चेन जो मैं दिखा रहा हूं इसको ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं. ठीक है. ट्रॉपिक लेवल. ठीक है. सेकेंडरी, टर्शरी. ठीक है. तो हर ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% ऑफ एनर्जी पास होता है. ठीक है. अगर इसने 10,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया है तो यहां पे 1000 आएगा. यहां से 100 किलो कैलोरीज जाएगा और फाइनली 10 जाएगा. इसीलिए जो टर्सरी हाईएस्ट ऊपर लेवल पे रहता है, देयर पॉपुलेशन इज वेरी लेस. फॉर एग्जांपल ब्लू व्हेल, their population is less. Why? Because the energy being passed on is only 10% from one trophic level to another trophic level. ठीक है. So they feed at the lowest trophic levels. That means they feed on directly on plants. Detritus, detritus का मतलब होता है dead beings. Algae. ठीक है. And they are good source of protein and vitamins. ठीक है. Since they are good source of protein and vitamins and they taste delicious, they are very much in demand. ठीक है. तो mullets look like what this, and among this also, which is the most famous? It's the gray mullets और द गोल्ड स्पॉट मुलेट्स. ये तो पक्का खाया होगा आपने. ठीक है. ठीक है. होने का तो इसका टोटल इंडिया में 13 स्पीसीज है, पर 8 स्पीसीज ही कमर्शियली बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. ठीक है. एंड म्यूलेट्स अकाउंट फॉर अराउंड 3 to 7% ऑफ फिशरीज इन इंडिया. ठीक है. अब एक फिश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मिल्क फिश. ठीक है. मिल्क को मलयालम में पाल बोलते हैं, पाल, और फिश को मीन बोलते हैं. तो केरला में इसको क्या कहते हैं? पाल मीन. ठीक है. साउथ एशिया में बहुत ही पॉपुलर है. ठीक है. एंड दे आर फाउंड इन साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन. तो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है. तो सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया एंड पैसिफिक ओशन में मिलता है. ठीक है. इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट कॉन्साइड्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ एरियाज.
सो कोरल रीफ एरियाज जहां जहां होते हैं उसी एरिया में इसको पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? दोनों को सेम ज्योग्राफिकल कंडीशंस मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए। क्या है? क्लियर वाटर, water level should not be very high, shallow, temperature should be from 20 to 22 degree centigrade. ठीक है? And it is one of the most important species which is cultured in Southeast Asia. Southeast Asia में इसको बहुत ही खाया जाता है। ठीक है? चूंकि ये ब्रैकिश वाटर का फिश है तो स्मॉल स्केल्स आर अवेलेबल, स्मॉल स्केल्स। ठीक है? बास, एशियन सी बास। ठीक है? इट इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज जायंट शी पर्च। ठीक है? एशियन सी बास एंड टाइगर बास। ठीक है? इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रे स्ट्रिप्स, ग्रीन स्ट्रिप्स होता है। टाइगर बास में स्ट्रिप्स है, स्ट्राइप्स है, सॉरी स्ट्रिप्स नॉट स्ट्राइप्स, एंड दे आर लॉन्गिट्यूडनल, they are latitudinal in nature, sorry, latitudinal, so they resemble the stripes of tiger. That's the reason it is called as tiger bass. ठीक है? देखो, अभी जितनी ही ब्रैकिश फिश की बात होगी, इंडिया की बात हो रही है, तो ऑल ऑफ देम आर व्हाट? दे आर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फिशेस। उसके बाद आता है पर्ल स्पॉट। दिस इज व्हाट? दिस इज द, this is nothing but this is the state fish of Kerala. This is the state fish of Kerala. कहां पे होता है? बैक वाटर में। बैक वाटर क्या है? ब्रैकिश वाटर है। ठीक है? केरला में इसको करी मीन कहते हैं। ठीक है? इसका बहुत सारा करी बनता है, एंड इन केरला इट इज नोन एज करी मीन। यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर इन केरला। चीप है, 60 रुपीज में आपको 400 500 400 ग्राम 500 ग्राम का मिल जाता है होटल में। नॉर्मल खरीदने जाओ तो उससे भी सस्ता होगा। ठीक है? And this is totally baked using masala. It is totally baked and good amount of coconut oil, and it is covered with banana, and you can eat it. It's delicious. ठीक है? Now we'll talk about groupers. Okay. So when we talk about groupers, we will see that these are commonly found in Indian waters. ठीक है? They are desirable for what? Their taste. Their taste is highly desired. ठीक है? And since they are tasty, they are highly in demand. ठीक है? The most famous among them is greasy groupers. ठीक है? Orange spotted groupers. आपको दिख रहा होगा ऑरेंज स्पॉट्स। ठीक है? Then you have brown lined reef cod. ठीक है? And they are nothing but groupers. ठीक है? देखो, अभी जब हम लोग कोर का भी कोर सब्जेक्ट डील करेंगे तो विल टॉक अबाउट फिश टैक्सोनॉमी, विल टॉक्स अबाउट फिश का पूरा जियोलॉजिकल पार्ट। ओके, सो दैट सेक्शन विल बी डेल्ट बाय द एक्सपर्ट ऑफ फिशरीज। हर क्लास इज शेड्यूल्ड ऑन संडे। ठीक है? सो आई विल शेयर द लिंक एज वेल। ठीक है? स्कैट, स्पॉटेड स्कैट। ठीक है? ये दो तरह का होता है। ग्रीन स्कैट होता है और दूसरा होता है रूबी स्कैट। ठीक है? रूबी इज रेड इन कलर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज रेड स्कैट। ठीक है? इट इज वाइडली फाउंड इन इंडियन पैसिफिक वाटर। ठीक है? इट इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर एक्वेरियम। ओके, इट्स ऑल्सो पॉपुलर फॉर
aquarium, ठीक है. And since it is not only used for food but also for ornamental purpose, so it's have high economic demand, ठीक है. Let's move towards the next one. देखो, I have told you about catfish of the river. I have told you catfish have the quality that their head is very bony. They have barnacles like cat, okay, and they don't have scales, okay. So when we talk about the catfish of brackish water, have you heard about टेंगरा माछ और टेंगरा मछली के बारे में सुना है? So that is लॉन्ग विस्कस कैटफिश. उसी टेंगरा माछ में आप देखोगे कि एक स्ट्राइप ड्वार्फ वाला होता है, ठीक है, छोटा साइज का होता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्राइप ड्वार्फ कैटफिश, ठीक है. दे आर फाउंड लार्जली इन एरिया वेयर वी हैव मड और क्लेव सबस्ट्रेटम, ठीक है. फ्रेश वाटर में ज्यादा नहीं मिलता है ये, ठीक है. ब्रैकिश वाटर में मीटिंग पॉइंट जहां पे होगा वहां ज्यादा मिलेगा, ठीक है. मडी वाटर में ज्यादा है, ठीक है. एक और देख लीजिए, ठीक है. ये कंफ्यूज मत करो पॉम्फ्रेट से, ठीक है. ये क्या है? ये पॉम्पनाओ है, ठीक है. दिस इज नोन एज सिल्वर पॉम्पनाओ, ठीक है. इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ करांगिडिए, ठीक है. इट रिसेंबल्स सिल्वर पॉम्फ्रेट बट इट इज नॉट पॉम्फ्रेट, ठीक है. इट इज फाउंड इन शैलो कोस्टल वाटर, ठीक है. एंड इट इज हाईली प्रॉमिसिंग स्पीसीज क्योंकि इसका ग्रोथ रेट हाई है, मीट क्वालिटी इज गुड एंड इट फेचेस हाई प्राइस, ठीक है. सिल्वर पैम्पनाओ. नो, लेट्स टॉक अबाउट मरीन फिशरीज इन इंडिया, ठीक है. See, I have told you earlier also, taking into account 9 states plus Andaman and Nicobar plus Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli, the entire coastline will come around 8,118. Exclusive economic zone is more than 20 lakh square kilometer. Continental shelf around 530 square kilometer. Territorial water, if we see in square kilometer term, it is around 2 lakh. Number of fish landing center is around 1500. Number of fishing village are around 3500. Number of fisherman family is 9 lakh. And if we see the entire population of the fisher folk population, will found that they are around half crores, ठीक है, 50 lakhs, ठीक है. It shows we have good amount of people belonging on this fishing in the coastal area, especially marine fishing resources we are talking about. We are not talking about inland fishing area. We are talking about the marine fishing area. If you move from Delhi towards the eastern side, you will find the fisherman folk community also increases. You go to Gorakhpur region. Gorakhpur has one of the largest lakes in India. Okay, I'm forgetting that name of lake. It is one of the largest, and because of that, Gorakhpur has also good amount of fisher folk population. Okay, fishing community. Similarly, you go to the Tarai belt of Nepal to Bihar flood area, you will find good amount of fishing community. In Bengal, you will find good amount of fishing community. In Assam, there is a community known as Kabarta. They are powerful, rich, but they are dependent on fishing. Okay, so you can understand the role of fisheries in
sustaining the human population, not only as a source of food, but also occupation. ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है, विल मूव फर्दर. ओके, जस्ट अ मोमेंट. See, I said I have forgotten the name of the lake. I just searched. It is, मुझे रामबान याद आ रहा था. It was actually रामगढ़ ताल. ठीक है, ताल. It's very huge. At one point of time, it was larger than the city. Just think, you are in Guwahati. Gorakhpur is as big as Guwahati in terms of area, or bigger than that. And at that point of time, Ramgarh Tal was bigger than the city. ठीक है. See, okay, it is Bay of Bengal. It's Arabian Sea. Which side you have more rivers? Major river, except Narmada, Tapi, Juari, Mandavi, and small rivers, Hemwati over here. Major rivers such as Ganga, Brahmaputra, Meghna, Barak, Kisan Ganga, Mahanadi, then Godavari, Krishna, Kaveri, Vagai, Palar, they are on the eastern coast. ठीक है. So these rivers, Chilka, Pulikat, Keloru, these rivers along with these brackish water lagoon, and then Andaman and Nicobar also there are few rivers. Okay, Andaman and Nicobar, you would be surprised, they are also good source of fishes, especially sheer fish. This is very famous variety of fish, and it is very tasty also. It is also known as kingfish. Of the total sea fish produced in the world, 20% is produced in India. ठीक है, और इस 20% में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है अंडमान एंड निकोबार का. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस गुड अमाउंट ऑफ कोस्ट लाइन एंड रिवर्स, एंड western side the continental slopes are broader, and because of that India has good amount of fisheries, fishing or fishing ground, fish breeding grounds. Here also Narmada and Tapi, they have estuaries, and because of that Gujarat is again the among the top 3 producers of fishes in India. ठीक है, पहले नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश कंबाइंडली, वेस्ट बंगाल एंड देन गुजरात. ठीक है, तो उसका मेजर रीजन क्या है? ज्योग्राफिकल कंडीशन. ये क्या है? ट्रॉपिकल वाटर है. ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल टेक्स प्लेस, ठीक है, इन बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी से ज्यादा रेनफॉल बे ऑफ बंगाल में होता है. ठीक है, उसके कारण क्या है मैं बता दूंगा. एक तो है आपका साउथ वेस्ट मानसून जो अरेबियन सी में भी जाता है, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिटर्न होता है. दिस इज नोन एज रिटर्निंग मानसून. सो दीज लगून्स रिसीव गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, उसके कारण यहाँ पे ब्रैकिश वाटर डेवलप होता है. ठीक है, वाइडर कॉन्टिनेंटल स्लोप है, गुड अमाउंट ऑफ डेल्टा एंड एस्चुरीज फॉर्मेशन है,
So river bring with themselves good amount of nutrients, and it becomes good ground for fishing in India, fish breeding in India. Yeah, this is something I had to explain. ठीक है. अब marine fishes can be grouped into three categories: surface water fish, mid water fish, and bottom water fish. Just remember it. ठीक है. सरफेस वाटर फिश, मिड वाटर फिश एंड बॉटम वाटर फिश. ठीक है. सरफेस वाटर में क्या है आपका? सार्डाइन है, ठीक है, रिबन फिश है, मैक्रेल है, सीर फिश है, टूना है. मिड वाटर फिश कहाँ है? बॉम्बे डक है, सिल्वर बिलीज है, हॉर्स मैक्रेल है. बॉटम में क्या है आपका? पॉम्फ्रेट है, कैटफिश है, फ्लैटफिश है, ईल्स है. ठीक है, पर्च है. ठीक है, इसमें जो मेजर है वो मैं आपको दिखा देता हूं. सार्डिन्स, देखो सार्डिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियन ऑयल सार्डिन, इंडियन ऑयल. ठीक है, ये 14 वैरायटी के होते हैं सार्डिन्स. ठीक है, पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इंडियन ऑयल सार्डिन. ठीक है, ये जो इंटायर आपका मरीन कैचिंग होता है इंडिया में ना, मरीन फिश कैच, उसका 15% है सार्डिन्स. ठीक है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन ऑयल सार्डिन्स. आप कभी साउथ इंडिया में जाओगे तो इसका कुरकुरा ऐसा फ्राई आपको खाने मिलेगा. इट्स वेरी डिलीशियस एंड यू विल डेफिनेटली ईट इट. ठीक है, पिक्चर देखो, यू विल बी एबल टू रिकॉल. ठीक है, इंडियन ऑयल सार्डिन दिख गया आपको. ठीक है, गोल्ड स्ट्रिप सार्डिन. ठीक है, फिंगर स्केल सार्डिन. ठीक है, एंकोविस. ठीक है, ये भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा. ठीक है, ग्रीनिश ब्लू होता है, ट्रांसपेरेंट आता है. ठीक है, इंडियन एंकोवी, ये बहुत ज्यादा दिखता है. ठीक है, इट इज फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, बट इसका मेजर कंसंट्रेशन कहाँ होता है? टेम्परेट वाटर में होता है. इट इज एब्सोल्युटली एब्सेंट इन कोल्ड वाटर. ठीक है, केरला के कोस्ट पे आपको क्या मिलेगा? मलाबार या मलबार एंकोवी. ठीक है, सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलता है? ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला. ठीक है, ये अलोन अकाउंट करते हैं 95% एंकोवीज के लिए. ठीक है, वहां के किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ ना, आपको मॉकटेल कॉकटेल इसके साथ इसी का आता है. जस्ट आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम एन ऑब्जर्वर ऑल द टाइम. दो आई एम ए टी टोटलर, आई ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द टाइम. It also says a lot about their hospitality industry and how they are making money. ठीक है, दूसरा है आपका मैक्रेल. ये आपको मुंबई में जाओ, सबसे सस्ता फिश यही मिलेगा और अच्छा है. ठीक है, इसको आपको अरेबियन सी में बहुत ज्यादा मिलता है मैक्रेल. ठीक है, सबसे ज्यादा इंडियन मैक्रेल, उसके बाद इंडियन चब मैक्रेल. ठीक है, सीर फिश आई हैव टॉक्ड अबाउट इट. इट इज ऑल्सो नोन एज किंग फिश. ठीक है, इट्स कमर्शियली मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश. ठीक है, इसके बारे में और कुछ बताना है क्या? ये आप खाने जाओगे ना सीर फिश, तो इसका दाम बहुत ज्यादा होता है, 19%. और इससे मिलता जुलता ही स्पीसीज है आपका टूना. ठीक है, ठीक है, जापान में इसको बहुत ज्यादा खाया जाता है टूना को. ठीक है, और टूना का ऑयल भी काफी फेमस है फॉर कीपिंग पीपल वेरी हेल्दी. तो 19% ऑफ ग्लोबल ट्यूना इज प्रेजेंट इन इंडियन फिश, सॉरी इन इंडियन ओशन. ठीक है, ठीक है, सर देखो टूना आई को वाज, हाँ, सर टूना को सर हम लोग का इंडिया में भी वो होते हैं क्या, कंज्यूम करके?
अरे बहुत मतलब बहुत होता है। टिन, इसको कैनिंग भी किया जाता है, कैन में रखा जाता है इसको। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको कुछ सर्च कर रहा सैलमन का होता है क्या हम लोग का यहाँ? हमारे यहाँ सॉल्मन नहीं होता है, ठीक है। हम्म। सॉल्मन्स आपको सिर्फ मिलेगा, क्या कहते हैं, या तो आपको मिलेगा वो कोल्ड कंट्रीज के पास, इंडिया के पास सॉल्मन्स नहीं मिलता है, ठीक है। इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट वैरायटी है वो है आपका सीर फिश, जिसको कहते हैं सुरमई, ठीक है। जस्ट ए मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ना, कमर्शियली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए है सुरमई। ये सुरमई, इसका दाम बहुत ज्यादा होता है, बट इट इज डिलीशियस, ठीक है। मैंने खाया है, बहुत बहुत डिलीशियस होता है, ठीक है। और टूना उससे मिलता जुलता होता है। टूना में आपको मैंने बताया था, अंडमान में ये भी बहुत ज्यादा होता है, लक्षद्वीप में भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ग्लोबली 20% टूनाज इंडिया में फाउंड होते हैं। जापानीज के पास ट्यूना अब खत्म हो चुका है, ठीक है, पर इसको बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं। तो इंडियन ओशन से भी आते हैं लेने के लिए, अरब अरब ओशन में भी जाते हैं लेने के लिए, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपका, ठीक है, वो है लिटिल टूना, ठीक है। उसके बाद है आपका स्किप जैक टूना, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा देखने मिल जाता है, ठीक है। येलो फिन टूना, सिंस ये इसका यूनिक फीचर है बिकॉज ऑफ येलो फिन एंड ऑल, इसके फिन का सूप भी बनता है, टूना के फिन का सूप भी बनता है जापान में, एंड इट्स ए डेलिकेसी, जापानीज डेलिकेसी। या यू वर सेइंग समथिंग? ठीक है। सी, इट इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल फिशेस, यस। ग्लोबली इसका जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में इसको सिर्फ एक फिश चैलेंज करता है, उसको कहते हैं सीर फिश, विच इज सुरमई, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा ये? ट्रॉपिकल ओशन एंड टेम्परेट ओशन में मिलेगा। इंडिया में सॉल्मोन्स नहीं मिलता है, ठीक है। टूनाज, सॉल्मोन्स है ना, कोल्ड वाटर एरिया का फिश है, ठीक है। दूसरा, सॉल्मोन्स इट मूव्स फ्रॉम ईस्चुरी टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर, ठीक है, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ स्पैन टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। इंडिया में जो इंडियन सॉल्मोन्स होता है उसको कहते हैं इलीश, हिल्सा, ठीक है। ये भी इस्चुराइन फिश है। इसका सबसे ज्यादा ये मिलता है पद्मा रिवर में, बांग्लादेश के पास, ठीक है। इंडिया में बांग्लादेश से इसको इंपोर्ट ही करते हैं, ये फ्रेश वाटर फिश है, पर इस्चुराइन इन नेचर है, ठीक है, कल पढ़ाया था, ठीक है। अब टूना यूनिक क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर है ना, जो इसके सराउंडिंग वाटर है इनसे ज्यादा होता है, ठीक है। और जब सराउंडिंग वाटर से इसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, ग्रोथ, ठीक है। इसको कैन में रख करके इसको, इसके ऑयल का ये एक डेलिकेसी है टूना, ठीक है। अब खत्म करने से पहले एक मैं आपको बताऊंगा फ्लैट फिश, व्हाई दे आर नोन एज फ्लैट, बिकॉज दे लुक फ्लैट इन कलर, बट व्हाई दे आर फ्लैट, सॉरी फ्लैट इन शेप, व्हाई दे आर फ्लैट, बिकॉज दे कैमोफ्लेज देमसेल्फ ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। दे आर 91 स्पीसीज ऑफ फ्लैट फिशेज इन इंडिया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपका? वो है मलाबार टंग सोल, इसको सोल फिश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है लार्ज स्केल टंग सोल, फिर है इंडियन हालीबट, एंड देन वी हैव लार्ज टूथ फाउंडर, ठीक है। सो दीज वेयर द ओनली marine fish of importance, okay. Tomorrow in another class we'll talk about crustaceans, shrimps and prawns, ठीक है, and even octopus, ठीक है, squids. Have you eaten squids? They are also commercially
Very much important. In case of any doubt, let me know. Secondly, the PDFs for the entire course will be provided to you once admission is taken. Hard copy will be provided. We will charge extra for hard copy. ठीक है, उसके लिए आपको पहुंचाना होगा मुझे. ठीक है. दूसरा, फिशरीज का फिश जूलॉजी पोर्शन विल बी टेकन बाय फिशरी एक्सपर्ट. ठीक है. उनका क्लास शेड्यूल हुआ है मोस्ट प्रोबेबली संडे को, या एक दो दिन में शेड्यूल हो जाएगा. ठीक है. Once these classes are scheduled, I will provide the link. The classes will continue and will complete the entire syllabus in 3.5 months time. We'll also provide you coaching of English language, which is part of your syllabus. Okay? To ensure that you come out with the flying colors. Thank you. Have a nice day ahead.